Hi, my name is Rachana. Welcome to my YouTube channel. On this channel, I'm going to talk about a makeup, clothing, travel, and much more fun stuff. So please stay tuned. Please subscribe and hit that bell icon. Please say before doing any presentation, you need to be look presentable first. For this video particular, I'm gonna share a makeup look, which is a office slash a meeting makeup look. You can say, or you can say, how to use our lesser product and get ready quickly. Let's go to the first video of this channel. So, makeup look start करने से पहले I'm gonna give you one advice that do put a skincare on your skin. Right? Before starting any makeup look, you need to have a base on your skin, and all the time skincare is gonna work as a base on your skin before you put any makeup. My makeup, I'm already done with my skincare, so I'm gonna show you next product which I'm gonna put as a primer, which is a Lakme Absolute. Next also I'm going to use one more primer. Why two primers? Because my skin condition is a combination skin. So my T junction is always oily and the rest of my face is a dry skin. जो अभी विंटर्स में थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है, so I'm gonna make sure everything is laid up very well. है जिसमें हम लोग अवॉइड करते हैं फाउंडेशन को यूज़ करना. दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वन मेकअप लुक जहाँ पे मैं बिल्कुल ही अवॉइड करूँगी जो भी सारा कवरेज है. आई एम गोना मेक श्योर कि वो मेरा कंसीलर से या फिर करेक्टर से कवर हो जाए. जो भी मेरा प्रॉब्लम है स्किन का वो हम जीरो नहीं कर सकते, ठीक है. जीरो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, बट विल मेक श्योर विल हाइड इट वेरी वेल. वाला करेक्टर फ्रॉम इनसाइड जो कि काफ़ी अच्छा कवरेज देगा टू हाइड माई डार्क सर्कल्स. my for my eyes also I'm gonna make sure I blended everything with my finger because I'm very comfortable with the finger pressure. I know how to give a pressure on any point. And जब आप ब्रश से नहीं काम करते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है आप फिंगर से नहीं काम करते हैं तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं. अगर आप कंफर्टेबल है तो आप फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं. अगर आप कंफर्टेबल है तो आप ब्यूटी स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं. राइट नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ माई फिंगर्स जो कि स्पॉट करेक्टर्स सारे होते हैं. आई मेक श्योर कि एवरीथिंग इज कवर्ड. और सिर्फ ऑरेंज करेक्टर नहीं, वी गोना मेक श्योर दैट पीच इज ऑल्सो लिटिल बिट एडेड टू, क्योंकि हम इस लुक में सिर्फ कंसीलर और करेक्टर से ही काम कर रहे हैं, कोई भी फाउंडेशन नहीं जाने वाला है. तो आई मेक श्योर कि एवरीथिंग इज ब्लेंडेड वेरी वेल. तो मैं उसी पे मिक्स करूँगी, उसी पॉइंट पे उन दोनों चीज़ों को मिक्स करूँगी. आई मेक श्योर माई ऑल स्पॉट्स आर हिडन एंड आई डोंट नीड मच मोर प्रोडक्ट. दिस इज अ कंसीलर फ्रॉम Malaysia. I put a concealer. तो ये जो कंसीलर है वो मेरी शेड में है 120 बेज एंड दिस इज फ्रॉम श्री शैन एंड स्किन एसेंशियल. जहाँ जहाँ भी हमने स्पॉट किया है, जो भी कलर करेक्शन किया है, वो आप कंसीलर से अच्छी तरीके से ब्लेंड करवा लीजिए. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आई एम गोना टेक अ मिरर क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा इजी है देखने के लिए. I'm gonna use next Maybelline Fit Me का compact powder. My shade is 230 natural buff and this is a matte plus poreless. So जो भी सारा products है I have made sure कि वो सारा का सारा हाई एंड पे ना जाए. वो थोड़ा सा ड्रग स्टोर थोड़ा हाई एंड करके ही मैं मेक श्योर कि हम ऐसे यूज़ करें.
Don't forget your neck. When you are doing foundation also, don't forget your neck. Okay, next we're gonna set our brows. भगवान की दया से मेरी ब्रोज बहुत ही अच्छी है. आई नेवर डिड एनी एक्स्ट्रा एफर्ट टू डू माई ब्रोज. बट अभी के लिए फिलहाल यू कैन मेक श्योर कि ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, ये थोड़ी सी पतली है. वो दो आईब्रोज से पहले मुझसे गलती से कट गया था, तो इस वजह से ये थोड़ा मोटा पतला है. तो we're gonna make sure that we cover that problem. इतना डिटेल्स आप स्किप भी कर सकते हैं, पर ब्रॉज सेट करना मेरा लाइक फेस का पूरा हाईलाइटेड पार्ट ही मेरा आईज एंड मेरा ब्राउज है. सो आई एम गोना मेक श्योर दिस इज लाइक अ प्लस पॉइंट फॉर मी. मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्रॉज को कॉम किया है. आई हैव नॉट टेकन एनी प्रोडक्ट टू सेट माई ब्रॉज बिकॉज माई ब्रॉज आर very natural and very perfect, as everybody told me. But if you have uneven brows, let me tell you how you can fix it. So take any brow pencil and little bit you can feel it, like अंदर से ही आप फील करें. आप उसको कोई शेप में प्लीज ना दे. अब जो भी आपकी आईब्रो है उसको अंदर अंदर से ही फील करें. आपको जहाँ जहाँ पे लगता है कि वो गैप है, एंड दैट्स इट. दिस इज लाइक सेटल्ड फॉर मी. मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सा अंदर अंदर से फील करके दिखाया आपको कि थोड़ा थोड़ा सा जहाँ पे आपको लगता है कि आपका बाल यहाँ वहाँ से कम है, तो यू जस्ट कैन फील इट. इफ यू हैव अ नेचुरल ब्लैक brows like me, you can use a black pencil. For eye makeup, we're gonna take a City Mini palette again from a Maybelline, and we gonna take this concealed color जो कि थोड़ा थोड़ा सा ब्राइटन करेगा मेरी आईज को. और उसके बाद we're gonna take this brown color जो कि हम थोड़ा थोड़ा सा करेंगे सेट उसको आईलिड्स पे, ताकि वो एक थोड़ा सा हुडेड सा आई लगे और काफी नेचुरल रहने देना है. एंड ऑल्सो इन माई प्रोफेशन वी कॉल लेस इज मोर, सो कीप इट लाइक दैट. लेस इज मोर बहुत ही मिनिमल मेकअप है वो एवरीडे के लिए. इट्स प्रिफरेबल. तो आपकी स्किन को भी ब्रीदेबल फील होगा, आपको भी ब्रीदेबल फील होगा, एंड यू विल नॉट बी uncomfortable in any situations. Lip and cheek tint from a Blur Cosmetics, and this is a lip and cheek tint. This is to don't touch my gloss in the red wear. I have three of them: brown, red, and pink. Let's take that gloss lip and cheek tint. I'm gonna put it on my eyes on the outer corner, and I'm gonna put it on my cheek as a cheek tint or a blush. I'm gonna a little bit put it on my nose and chin. So blush brush, and I'm gonna blend it. My eyes also. I'm blending it inner and outer. Blush को भी I'm blending upwards, right? So it will give me a kind of lifted look. Okay, next thing is a eyeliner. For eyeliner, I'm gonna go extra because I what profession I belong to. It's an artistic profession, so I like to do some artistic thing with my eyeliner. If you guys don't want to do any artistic thing, you can go for a normal wing liner or anything, whatever you prefer. But for now, we gonna put eyeliner. So again, this is also from a Maybelline, a hypergloss eyeliner. I prefer a liquid liner over any other pencil liner because a if I want to do a smoky eye look, then I use a pencil liner, and I'm not particular with a pen eyeliner. वो मुझे इतना नहीं पसंद है. So I'm very comfortable with this kind of a liquid liner. So offline we can do my liner. Yay! सो ये है विंक लाइनर जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं. अदर आईज आई एम ऑल्सो गोना डू ऑफलाइन.
ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहते हो अपनी आइज के साथ, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो या आर्टिस्टिक नहीं बनाना चाहते हो, यू कैन स्किप दिस स्टेप ओवर हियर। व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट, आप इसी के साथ अपना मस्कारा करके अपना लुक कंप्लीट कर सकते हैं। बट as I told you, I'm gonna go a little extra with my eyes because I belong to an architecture and interior profession, ठीक है? So I like to put whatever artistic things I have, I to build a kind of impression जो कि मुझे लेके लोगों को है कि थोड़ा सा आर्टिस्टिक इसका आई लुक होगा ही होगा। What? Bro, what are you talking about, man? माइग्लेम का लिपस्टिक और जो कि है यम्मी लाइनर या लाइनर ब्रश, जो भी आपका आई लाइनर ब्रश जो भी है वो, आई एम गोना टेक इट एंड थोड़ा सा लगता है उसको लगाने में, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। This is how my eyes looking like and इसको हम फिनिश करेंगे मस्कारा के साथ। I'm going to take again a Maybelline product which is a sky high mascara. I love it, you know. Wait, let me guys give you a view for this. Again, my eyelashes are also a very fine and nice, so I don't put any extra lash on my eyelash. I call it and I'm fine. Okay, big mascara. I'm gonna curl my lash. Don't forget your lower lash too. So you can see how illuminating effect it is giving to my eyes and why I prefer this mascara over any other. This is the best mascara. Okay, next we're gonna do our lipstick. For the lipstick, first I'm gonna use this Clinique का shade है इसका sunset. Okay, so and this is a very natural brown जो कि मेरी स्किन पे जाता है, बहुत ही सही लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। In lipstick we're gonna mix another lipstick with the same whatever I used on my eyelids. I'm gonna take and put on my lips थोड़ा सा, और उसको मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड करना पसंद करूंगी। Gloss I'm gonna use the blur का don't touch my gloss in the shade pink. मैं खत्म कर दिया इसको, इतना सा बचा हुआ है। 12 seconds later. Use this fixing spray. I'm taking inside ka makeup fixture which will give you a hydration and little bit fix your makeup. So make sure you use this. Okay, so this is the final look. Do let me know in the comment how you like this look. Please मुझे बताइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, and do let me know in the comment what I should do next and stay tuned.